He's a co-founder of WorkChest, Pakistan's first and largest freelance marketplace with 200k plus users as of now. He carries 20 plus years of experience in the online industry and has developed deep understanding of the needs and challenges of both sides of the freelance economy. His core competencies include pay-per-click, digital strategy, social media marketing, and blogging. इनका मिशन है to create digital collaboration and business opportunities for freelancers and buyers across the globe. He also owns Big Being Guru, a technology, freelancing, and earnings blog that provides free and valuable content on various topics related to online success. Uh, Through this platform, he aims to educate, inspire, and empower millions of people to learn new skills, leverage the internet, and achieve their goals. So I would urge my entire LinkedIn family who's ever followed me to please ensure कि आप सीखें जो ये प्रीच करेंगे इन्होंने हमें टाइम दिया दैट इज़ आई फील लकी कि वो हमारे साथ ये टाइम स्पेंड करेंगे जो जो ये स्किल सिखाते हैं और जो जो इनके यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है वो उसको री एम्फोसाइज करेंगे यहाँ पे प्लीज़ वो सीखें think big, think international, and earn for yourself and your family and create wealth. So, with that, I would like to invite Sham Saab. Sir, thank you so much. सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपका? How's everything? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। God has been very kind, अल्हम्दुलिल्लाह। Sir, thank you for joining in once again. I will have certain questions. मैंने already अपनी audience को I asked them if they have certain relevant questions that they can equip themselves with, and मैं उसके through आपसे questions भी पूछता रहूँगा, and obviously we can take the conversation from there. Sir, Sure, looking forward to that. To start with, एक बहुत basic question है. अगर मैं आज एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉई हूँ या फिर एक जॉब करने वाला बंदा हूँ एंड आई वांट टू क्रिएट समथिंग बिग एज अ फ्रीलांसर ऑनलाइन, चाहे वो फाइवर हो, चाहे वर्क हो या कोई और स्ट्रीम हो, सो व्हाट स्टेप्स, आई नो आपके यूट्यूब चैनल पे और आपकी सोशल मीडिया स्ट्रीम्स पे ये सब अवेलेबल है, बट इन समरी व्हाट वुड यू रेकमेंड टू पीपल जिनको कोई आइडिया नहीं है, वो सोचते हैं कहाँ से स्टार्ट करें और किधर पहुंचे, कौन इतनी मेहनत करे, उनको आप क्या सर सजेशन देंगे या क्या स्टेप्स बताएंगे जिससे वो जल्दी उस पाथ पे आ सके ताकि वो अर्न करना स्टार्ट कर सके? आपने कहा मैं कॉर्पोरेट इंडिविजुअल हूँ, which essentially means के आप नौकरी पेशा इंसान हैं और किसी इदारे में काम कर रहे हैं। अब अगर आपका तजर्बा नौकरी का यानी 9 से 5 मुलाजमत का वो 10 साल से ज़्यादा है, तो आपके लिए जो नुस्खा है वो मुख्तलिफ है। पर अगर आप एक कॉर्पोरेट पर्सन हैं who's just started, then the advice for you is different. So I'll take both scenarios forward, but second thing first, अगर आपका 10 साल का तजर्बा है तो मैं सिंपली आपको ये एडवाइस करूँगा, go to udemy.com, कुछ भी सीखिए फ्रीलांसिंग के गिरदोनवा। So the best advice here would be learn how to freelance. Once you learn how to freelance, you will find out that there are two soft skills you need to have a full grip on. एक है जनाब वाली डिजिटल मार्केटिंग यानी बेचने का तरीका, और दूसरा कम्युनिकेशन स्किल कि आपको बात करने का तरीका आना चाहिए ना। यू नीड टू सेल योर बिजनेस अक्रॉस 7 ओशंस, क्योंकि वर्चुअल प्रेजेंस है, आपका क्लाइंट कहीं पे भी हो सकता है। अब अगर आपको बेचना आ गया, आपको बात करना आ गया, इट ऑटोमेटिकली इज अ foolproof recipe for you to become successful as a freelancer. If I were you who has got 10 years of experience, जब सिर्फ thinking out loud here, जैसे मैंने कहा कि I'll answer the second scenario first, then I would not worry about putting my energies to get hands down and start finding job opportunities, and then उन job opportunities को खुद ही complete करो. I think I would be more inclined towards creating a group panel or a group of energetic young individuals who are hands down, जिनको मैं अपने कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस लाते हुए मैं उनको कहूँगा कि जी मैं प्रोजेक्ट लेके आऊँगा, मुझे अभी बेसिक चीज़ें समझा दो, मुझे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मार्केट की, मुझे तुम्हारा पोर्टफोलियो पता होना चाहिए,
So by lending me your portfolio and by joining hands with me as my team, मैं काम करूंगा as a business developer because I know how to sell, I know how to communicate. याद रहे digital marketing और फिर communication skill. And then I would go to different freelance marketplaces to begin with upwork.com, फिर guru.com और फिर साथ साथ मेरी LinkedIn पर presence हो. And then most importantly, I should have my personal brand reflected in a form of a website. उस वेबसाइट पे मेरा पोर्टफोलियो पड़ा इन लोगों का जो मेरे ग्रुप में है. एंड देन आई विल फोकस ऑन गूगल एड्स. वहां पे बिजनेस रिलेटेड कीवर्ड्स को किसी भी कंट्री को टारगेट करते हैं. फॉर एग्जांपल सस्ता आपको पड़ जाता है मलेशिया, सिंगापुर. वहां से आप बिजनेस रिलेटेड कीवर्ड्स अगेन फॉर डिस्कशन सेक, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, इस तरह के अपनी फील्ड से रिलेटेड जिनमें मेरा इंटरेस्ट है उन कीवर्ड्स को मैं प्रोजेक्ट करूंगा, गूगल एड्स पे पैसे लगाऊंगा और वो वन टाइम मेरी इन्वेस्टमेंट है. मिसाल के तौर पर इन्वेस्टमेंट ऐसी है कि 10 साल के बाद आपको आपका दरा निकाल देता है एज ए कॉर्पोरेट इंडिविजुअल. मरता क्या ना करता, या तो आप नई नौकरी ढूंढेंगे या आप कुछ कारोबार करेंगे. इस वक्त आई एज्यूम कि आपने कुछ हैंडफुल नंबर ऑफ मनी सेव कर लिया, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए. या तो आप रियल एस्टेट में इंजेक्ट करेंगे इन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट या फिर आप कुछ रियल बिजनेस की तरफ जाएंगे. सो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ माय माय थॉट प्रोसेस. एक रियल एस्टेट या फिर कोई रियल बिजनेस है, दोनों रियली पन इंटेंडेड. तो जनाब मैं जाऊंगा रियल बिजनेस की तरफ क्योंकि मुझे पता है अगर मेरा रियल बिजनेस चल गया तो मैं ऐसे 10,000 रियल एस्टेट के जो है ना मिरेकल्स पुल ऑफ कर सकता हूँ. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ऑल यू नीड इज मनी टू बाय प्रॉपर्टी. तो मैं सरकार वेबसाइट पे गूगल एड्स के थ्रू ट्रैफिक लेके आऊंगा. मैं गूगल एड्स पे एक बंदे की जिम्मेदारी लगाऊंगा, भाई तू बिड करो उस पे. आई नो हाउ टू डू दैट बिकॉज आई हैव लर्नड हाउ टू कम्युनिकेट. आई विल हेल्प यू आउट. बट तुम ये तारा मसीह वाला काम जो है ना ये बेसिक करते रहो, रोज प्रपोजल्स भेजो, हमारी सर्विसेज भेजो. आई कैन अश्योर यू इन 30 days time frame, by the time you hit closer to the month's end, I think you'll have a fair shot about how this is shaping up and what's the way forward. If you're beginning to get responses to your bid proposals, it automatically means that regardless of the conversions, at least the investment you have made is in the right direction. That is investment made on yourself to learn communication skill, या फिर business development skill, या फिर investment made with regards to Google ads or to buy the membership of those freelance marketplaces. या बंदे की सैलरी देनी है कि यार छोटी मोटी तुम 2 घंटे और बिड कर लो और मैं फिर देखता रहूंगा कि क्लाइंट से बात कैसे करनी है. बेस्ट ऑफ द BDs आर एक्चुअली द ओनर्स ऑफ द कंपनीज. मैं दोबारा दोहराई देता हूँ, बेस्ट ऑफ द BDs, बिजनेस डेवलपर्स, आर एक्चुअली द ओनर्स ऑफ द कंपनी. क्योंकि आपको पता है कि अपने काम में मेहनत करनी है, कोई आपके लिए मेहनत नहीं करता होता, ये याद रखिएगा. The moment I understood this philosophy 8 years, 6 years back, actually, the life is different. Before then, I was dependent on people. आज मेरे दायरे से सारे लोग निकाल दें, I will still not hit the road. The reason being because I'm not dependent on people. तो मैं अपने हाथ में रखूंगा communication. मैं क्लाइंट से खुद बात करूंगा, क्लाइंट से कन्वर्स करूंगा. And if I'm getting a handful number of responses in the first month, regardless of the fact कि वो materialize conversion हुए नहीं हुए, कन्वर्ट ना भी हूं, एटलीस्ट मुझे एक फेयर आइडिया मिल गया कि या दिस इज द पैरामीटर. आई एम गेटिंग अ रिस्पांस टू माय बिड प्रपोजल्स. देयर इज समथिंग इन दिस मार्केट, दिस थिंग इज फॉर रियल. अब अगले महीने मैंने इसको बेहतर करना है कि मैं अपनी कन्वर्जन्स कर पाऊं, मैं लीड्स को कन्वर्ट करके सेल्स में कन्वर्ट कर पाऊं. एंड देन ऑफ कोर्स जितनी आप मेहनत करते हैं तो you'll develop a knack of communicating fantabulously well, incredibly well, where you'll be able to convert those leads into sales. If I were a corporate employee of over 10 years. Now, if I was a corporate employee and if I were to freelancing, to do freelancing, मैं सरकार क्या करूंगा, मैं अपने आप को 3 महीने एक कमरे में बंद कर दूंगा, 90 days, and I'll learn a hands down skill alongside the soft skills I've mentioned. बेचना सीख जाओ, कमाना शुरू हो जाएगा. सो बिजनेस डेवलपमेंट इज, डिजिटल मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसी के अंदर बिजनेस डेवलपमेंट आ जाता है. दूसरा एलिमेंट है कम्युनिकेशन स्किल. बात करने का तरीका आना चाहिए. हाउ कैन आई सक्सेसफुली कन्वे माय पॉइंट ऑफ व्यू अक्रॉस.
लेकिन फिर अब मुझे स्किल भी सीखना पड़ेगी, क्योंकि अभी मेरे पास पैसे नहीं है। 1 साल का एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट का, मेरे को 1 रुपया नहीं बचा, लिटरली मेकिंग एंड्स मीट, हैंड्स टू माउथ। फिर मैं स्किल पूरी सीखूंगा इनसाइड आउट इन 90 days. 45 days should be spent on learning of a skill, 45 days should be spent on practicing that skill, but factor in the rest. The remaining 45 days should also be spent in learning. So 90 days practically for learning, 45 days for practice. 3 महीने हो गए और वी आर गुड टू गो जी। उसका मतलब ये है कि मुझे बेसिक नॉलेज आ गई है, प्रैक्टिस भी कर ली है, मेरा पोर्टफोलियो भी बन जाएगा व्हाइल आई एम प्रैक्टिसिंग दैट स्किल, एंड देन आई विल बी एबल टू जंप ऑन अ फ्रीलांस मार्केटप्लेस, क्रिएट अ प्रोफाइल। इस केस में तब भी मेरे ख्याल में मशवरा मैं यही दूंगा कि गेट योर ओन वेबसाइट, फोकस ऑन बिजनेस रिलेटेड कीवर्ड्स। पैसे नहीं लगा पाओगे गूगल में फॉर गूगल एड्स, दैट्स फाइन, but if you focus on organic keywords, then there is a good chance that your website is found for your business related keywords in Google search engine, which essentially is uh, you know uh, a blessing in disguise. यहाँ पे मैं एक काम करूंगा सईद, the best way of growing is to educate people. I will create a YouTube channel and I'll start talking about my skill set कि यार मैं अगर वेब डेवलपर हूँ, मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ ना, तो मैं स्किल सेट के बारे में बात करना शुरू कर दूँ। So I'll be more inclined in educating people about कि कैसे वेबसाइट, short keys, basic hacks of web development or graphic design, whatever your skill set is. When people start watching your content as a teacher, uh, this is a recipe in the long run, if you are lucky, in a short run, for you to be taken as a subject matter expert. And once you are taken as a subject matter expert, भाईजन, तो एन मुमकिन है बंदा कहता है यार अब ये स्यापे रहने दे, मैंने नहीं ये वेबसाइट वेबसाइट बनानी, भाई मुझे पता कितनी उजरत लेगा, काम कर ले। 2 तरीके आपको बता दिए, 1 साल का भी 10 साल का भी, और बड़ी जामे बात बता दी। थैंक यू सो मच। तो सर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ये है कि इट टेक्स टाइम, सो व्हाट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि ये नहीं कि 90 डेज में अगर ट्रेनिंग भी करें तो 91st डे पे आपको क्लाइंट भाग रहा होगा कि यार पैसे दे, टेक्स टाइम, राइट? असल में hiding your luck is the word here. Hiding your luck. You never know. आप कल बिड करें आपको प्रोजेक्ट आ जाए, even without a portfolio or a decent looking profile. Sometimes it takes a lot of time for an ice to melt and then for you to get in a chance and get lucky enough. So इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, but my point here is Denzel Washington, a famous Hollywood star says, without commitment you cannot start, without consistency you cannot finish. तो लगे रहे, एक वक्त आएगा कि खटखटाते रहे, दर खुल जाएगा। And I believe this stands true for every field. Pick a movie star, pick a musician. You cannot become a CEO of your company. You'll have to go through a process, unless के परिजात का सीन हो जाए. So it stands true for every walk of life, नहीं? बिल्कुल। आज का छोटा कल का उस्ताद है ना, तो पहले तो छोटा ही है। तो मेहनत पूरी है। क्योंकि मेरे पास शाम साहब, हमारे पास लिंक्डइन पे भी बहुत लोग आते हैं यार, ठीक है फाइवर पे किया, अपवर्क पे किया, हमने स्किल्स भी सीखी, हम कब से बिड कर रहे हैं। आई नो आईटी ग्रेजुएट्स एज वेल, 4 साल डिग्री ली है, फाइवर पे कोशिश कर रहे हैं, कहते हैं। और वही ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि वी डोंट गेट प्रोजेक्ट्स एंड वी से probably you don't know how, मेरे पास उसका आंसर नहीं because I'm not a subject matter expert, but they say we don't know how to create an effective Fiverr or Upwork gig. And I know आपने YouTube पे इस पे specific, and people who are watching this can go to Sham Saab's channel and see a detailed conversation on this कि कैसे बनाने, but क्या मिस कर रहे हैं वो। एक तो मैं समझ गया आपके, वो कहते हैं हमने सब कर लिया तब भी हमें जो है ना आ नहीं रहा, क्लाइंट नहीं आ रहा, हमने हर चीज कर ली वेबसाइट में। सिंपल मैथ्स है। सैचुरेटेड मार्केट में जाओगे ना, तो जो बड़े मगरमच्छ हैं वो खा जाएंगे आप। इसका मतलब ये है कि लेस पॉपुलेटेड नीश में जाना पड़ेगा। मार्केट प्लेस तो मंडी तो एक ही है ना,
मिसाल के तौर पे सीज़न है, अभी हमारे यहाँ तो सर्दियाँ हैं, तो हमारे यहाँ ड्राई फ्रूट्स चलते हैं। इमेजिन आप आ गए यहाँ पे ड्राई फ्रूट बेचने, सर हम आपको बेचने देंगे? हम बैठे हुए जगती सब पूछती, टाइम नहीं। आपको कुछ नया लाना पड़ेगा। फिर आप क्या करेंगे सर? आप पैकेजिंग अच्छी लेके आएँगे, आप प्राइसिंग बड़ी मज़ेदार करेंगे, आप मे बी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देंगे। सो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड इट्स अ नैग। बिज़नेस डेवलपमेंट का जब मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ ना डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, नैग का वर्ड मैंने तीसरी चौथी दफ़ा यूज़ कर लिया। लर्न हाउ टू ट्रांसलेट योर वर्क इनटू बिज़नेस। इसकी इसकी तशरीह करना बड़ी ज़रूरी है, और वो जो ट्रांज़िशन का प्रोसेस है ना, वो बिज़नेस डेवलपमेंट है। लर्न हाउ टू कन्वर्ट योर वर्क इनटू अ बिज़नेस। एंड शाहजा, आई बिलीव इस पे भी स्पेसिफिकली आपने जो कंटेंट है यू ऑलरेडी प्रोवाइडेड ऑन योर चैनल, इफ एनीवन वांट्स टू व्यू इन डिटेल कि हाउ व्हाट डज सरकार 1.4 मिलियन अगर वहां पे सब्सक्राइबर्स हैं और 2,000 वीडियोस हैं, तो योर गेस इज एज गुड एज माइन। कुछ चीज ऐसी नहीं है जो मैंने नहीं छोड़ी हुई। ठीक। तो इफ सो फॉर पीपल इफ दे वांट टू स्टार्ट अ फ्रेश, वेदर वो एक्सपीरियंस्ड हो या फिर वो फ्रेश हो या फिर यंग ग्रेजुएट्स हो, बेचना सीखें, बेचना बेचना सीखें, सीखें। सिल्वर लाइनिंग हेयर इज बेचना सीखें। बेचना सीखें। मार्केट तो यही है ना, बायर्स भी यही हैं। अब आप क्या मुख्तलिफ करेंगे कि आपको एज अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान आके हटा दे? बस इतनी सी बात। मार्केट तो यही है ना। अब आप क्या ऐसा मुख्तलिफ करेंगे कि रॉजर फेडरर, राफेल नडाल या जोकोविच जो है वो पीट सैम्प्रस और आंद्रे एगसी को हटाएंगे? वे मार्केट तो या यही है ना। आप ऐसा क्या मुख्तलिफ करेंगे कि वसीम अकरम और वकार यूनुस आके इमरान खान को निकालें? इनोवेशन जबरदस्त बॉस। है, ग्रेट It is एनालिसिस। it is about speed. It is about nag. It is about innovation. It is about offers. Learn how to sell. That's what business development is all about. ग्रेट। अच्छा सर, आपकी आई वाज ब्राउजिंग थ्रू, फॉलोइंग यू एंड आई वाज ब्राउजिंग थ्रू योर यूट्यूब चैनल, तो ब्लॉगिंग के बारे में आपने काफ़ी बात की हुई है वहाँ पे, Mhm. एंड इट इज़ ऑफ इंटरेस्ट टू मी बिकॉज मैं लिंक्डइन पे काफ़ी कंटेंट लिखता हूँ, बट आई हैव नेवर एक्चुअली रिटन अ ब्लॉग। आई नो पीपल डू दैट। अगर कोई आज ब्लॉगिंग में आना चाहे, इज इट लुक्रेटिव या वो आप अपने पैशन के लिए करते हैं कि अच्छा ब्लॉगिंग टू टू हैव अ जर्नल, टू हैव अ फॉलोइंग, जिस तरह आपने बोला सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन जाते हैं, बट इवेंचुअली आज के दौर में यू फील कि अच्छा इट कैन टर्न टुवर्ड्स अ मनी मेकिंग और अ लुक्रेटिव फील्ड एज वेल? Why not? Absolutely yes. Why not? If you pick a field and you voice your opinion, there's a good chance कि अगर आपने अच्छा लिखा है तो गूगल को क्या चाहिए? गूगल को चाहिए फ्रेशनेस कंटेंट में, गूगल को चाहिए यूनिकनेस कंटेंट में, गूगल को चाहिए अप टू डेट इंफॉर्मेशन कंटेंट में। मैं दोबारा बोल देता हूँ, गूगल को चाहिए फ्रेशनेस, so that you put a spin to the existing concept that is already out there on Google. Google को चाहिए uniqueness, that your uh, content is unique from what is already out there on Google, and up to date knowledge. तीन बातें मैंने बोली, freshness, uniqueness, up to date knowledge, that your content has up to date stats reflected in it that is better than what is already indexed on Google search engine. If you can provide all these three elements, EAT इसको बोलते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा टेक्निकल डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो अथॉरिटी आप बिल्ड कर लेते हैं। अथॉरिटी बिल्ड करने के बाद बल्ले बल्ले आपका कंटेंट रैंक होगा, क्यों नहीं होगा? मेरा एक मानना ज़रूर है, और ये कि आज के दौर में alongside opening your blog and voicing your opinion through your content, I think one should start podcast as well. And podcast is something where you can have subject matter expert, and then they can reflect their insights worth years of experience. They can show their wisdom that is translated through the selection of words, and their course of actions over the period of time. तो ब्लॉग के साथ साथ पॉडकास्ट मुझे लगता है दैट इज द थिंग ऑफ टुडे एंड टुमारो एज ऑफ नाउ। ठीक। एंड ब्लॉगिंग अगर किसी ने स्टार्ट करनी, सो वी हैव ऑनलाइन
एवेन्यूज जहाँ पे वो जाएं, ब्लॉग बनाएं एंड देन गूगल के थ्रू हाँ, एड्स वर्डप्रेस वगैरह पे ब्लॉग बनता है और गूगल एडसेंस से मोनेटाइज होता है, बट अगर आपने मोनेटाइजेशन ही आई रखी हुई ना तो बड़ी खतरनाक बात है। वैल्यू ऐड करें, सब्सक्राइबर बेस बनाएं, लॉयल, ब्रांड लॉयल व्यूअरशिप होनी चाहिए सो दैट दे कीप coming back to you for watching more content and for watching more of your opinion reflected in a form of a content. So once you're able to do that, once you're able to build a viewership, money is a byproduct, boss. खुद ब खुद बनता शुरू हो जाएगा, बनेगा ही बनेगा। खाली एक एक तरीके से थोड़ी है कि गूगल एड से ही पैसे मिलेंगे, एडसेंस से। भैया आपका विजिबिलिटी। अच्छी व्यूअरशिप है, आप अच्छे आई बॉल्स अट्रैक्ट कर सकते हैं। If I've got a blog that I say is worth 100K unique users every single month, and if I tell you, give me 50,000 rupees and I can publish your blog post where you can talk about what you want to talk about, your new product, your new service or whatever it is, साला आप क्यों नहीं देंगे? हैप्पीली के तो ऐसे ही देते हैं। फिर बाद में जो एक्चुअल पैसा है ना, वो स्पॉन्सरशिप ब्लॉग पोस्ट का है, वो गूगल एड्स का नहीं है सर। So जो पैसा आपको मिल रहा होता है, which is lucrative, as so dare I say is this, it is actually through sponsorship posts, So the focus for anyone who wants to start viewership. fresh, the focus is viewership and obviously adding value. जो आपने तीन aspects बोले, freshness, uniqueness, and up to date information, which is something the spin off जो आप दे सकते हैं. And it takes time, obviously. ऐसा नहीं कि आप आज शुरू करेंगे. Simple आप example जाके देता हूँ ना, simple example, either real time. Pick a niche you want to create your blog about. जल्दी से, on a go. talent development. Talent development. Okay, fine enough. Talent development में क्या क्या उसकी nurturing के लिए क्या क्या चीजें करामद हो सकती हैं? On a go, whatever you think about. On a go. Trainings, modules for career progression, mentorship, coaching, ये सारी चीजें आपकी टैलेंट डेवलपमेंट में कंपनी में भी और जल्दी पर्सनल लेवल रोकते हैं। ट्रेनिंग में क्या क्या होती हैं? क्विक टेक्निकल सॉफ्ट स्किल मेन एवेन्यूज ये ट्रेनिंग के होते हैं. क्विक आगे चलते हैं क्योंकि आपका ताल्लुक एचआर से है ना। आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं किया लेकिन आई एम श्योर कि आपके प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो जा रही है तो आपके ऑडियंस को मालूम होगा। वो देख सकते हैं आपके आपके अबाउट सेक्शन को एचआर के। अच्छा चलें जी, ट्रेनिंग में किस तरह होगी? ऑनलाइन, इन पर्सन, वर्कशॉप्स, आइदर. उस ट्रेनिंग में क्या होता है? उस ट्रेनिंग में कंटेंट डिलीवर होता है एंड देन आपके टेस्ट होते हैं वहाँ पे. यू गेट टू इंटरेक्ट विद अदर लाइक माइंडेड पीपल. यू गेट टू मेक अ नेटवर्क. ऑनलाइन कैसे आप इंटरेक्ट करते हैं अदर लाइक माइंडेड पीपल? ऑनलाइन एक क्लासरूम कोहोर्ट वो बनाते हैं और आप उनसे अगर 100 लोग हैं, you can do presentations, you can make presentations with them, you can do group assignments with them. वो सब ऑनलाइन आजकल हो जाता है, जैसा फिर उसके कोर्सेरा पे बाद क्या होता है? असाइनमेंट के बाद टेस्ट होते हैं और फिर वो उसको कॉग्निटिव टेस्ट है या व्हाटएवर इट इज एंड देन वंस दे एस दैट दे दे इशूड अ सर्टिफिकेट। नहीं तो चलो फिर दोबारा लाइन में खड़े हो जाओ। हाँ, ये ना? यस. लो जी, मैं स्पिन लेके आता हूँ इस पर। तुम फेल ही ना हो। तुम अगर ऑन अ ब्रिंक ऑफ फेलियर हो, मैं तुम्हें 1-to-1 मेंटरिंग दूंगा अपनी ट्रेनिंग में ताकि तुम जो है एस कर लो। अब जब ये मैंने यूनिकनेस ले आया, राइट, और मैंने ये बता दिया कि जनाब आज के दौर में सबसे अपडेटेड इंफॉर्मेशन में ट्रेनिंग मैं दे रहा हूँ। और तीसरी बात कि मैंने ये देखा है कि इतने लोग फेल होते हैं पर्सनल डेवलपमेंट में, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट में, और उस फेलियर की वजह ये है, ये फेलियर है रीजन, ये इसके लिए टूल है और इसके लिए मैं 1-to-1 मेंटरिंग दे रहा हूँ। अब मुझे बताओ गूगल आपको प्रोमोट करेगा फॉर योर बिजनेस रिलेटेड कीवर्ड्स? हाँ या ना? आपके पास यूनिकनेस भी है, अप टू डेट इंफॉर्मेशन भी है और फ्रेश भी हो आप इंफॉर्मेशन वाइज। डेफिनेट. देखो कुछ कुछ कटिंग एज चाहिए कंटेंट में, कुछ कटिंग एज चाहिए, चाहे वो रिटन कंटेंट है या वो विजुअल कंटेंट है, कटिंग एज चाहिए। वो कटिंग एज मिल गया ना अल्फाबेट को। अल्फाबेट है बेसिकली कंपनी। गूगल सर्च इंजन है नीचे, यूट्यूब सर्च इंजन है, दोनों सर्च इंजन है। यहाँ पे लोग 5 चीजें सर्च करते हैं, 4 डब्ल्यू और 1 एच। व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। मैं दोहराई देता हूं, व्हाट, वेयर, व्हेन,
व्हाई, हाउ, ये यूट्यूब पे सर्च हो रहा है, ये गूगल सर्च इंजन पे हो रहा है, अल्फाबेट मेन कंपनी। तो भाई अगर आप इसका जवाब दे पाए और तीनों चीजों को आपने एज अ कटिंग एज प्रोजेक्ट कर दिया, तो क्यों नहीं रैंक होगा? चॉइस ही नहीं है गूगल के पास या यूट्यूब के पास, चाहे रिटर्न कंटेंट हो ब्लॉग के जरिए या विजुअल कंटेंट हो यूट्यूब के अंदर। Great, sir. And actually, even though I've been very active on LinkedIn, I've been sharing content there, even on YouTube. But जो आपने एंगल दिया है इसको, that is something कि उस हिसाब से अगर सोचें, I think हम बहुत सारी अपने नीश बना सकते हैं. A lot of नो people will think कि ऑफेंस इंटेंडेड, नो ऑफेंस इंटेंडेड। सीखना चाहते हैं एक सेकंड के लिए? आना, आना। yes, आपके लिंक्डइन पे कितने फॉलोअर्स? मेरे हैं 160,000. 160 के, राइट? किसी और को अगर कंपैरिजन में लेके जाएं, उसके 16,000 है। 1,44,000 का फर्क है बिल्कुल 160 और 16 में। ऐसा ही है? फर्क क्या है? फर्क बताया मुझे। आपने नोटिस नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, मेरा तो क्योंकि एज अ डिजिटल मार्केटर नीश ही यही है ना। अगर आपको नहीं पता तो मैं फिर आपके व्यूअर्स का टाइम सेव करने के लिए जल्दी से बता देता हूं। सर आप रेगुलर होंगे, आपका कंटेंट वैल्यूएबल इंसाइट दे रहा है, आपका कंटेंट जो है वो एजुकेटिव है, आपका कंटेंट इंपावरिंग है, आप जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे होंगे, आप ये बता रहे होंगे कि लोग क्यों नहीं सिलेक्ट होते, एजुकेट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्यों ना आपको व्यूअरशिप मिले। तो क्या करता है फिर? एल्गो आपको रैंक करना शुरू कर देता है, और जब एल्गो रैंक करना शुरू होता है तो फिर वो बताता है यार ही इज अ वॉइस अबाउट दिस, आ जाता है ना वो लेवल ऊपर, या टॉक्स अबाउट ए बी सी डी फॉर दैट मैटर, और फिर वो हैशटैग्स पे आप पॉपुलर हो जा रहे हैं। अभी मैं सरप्राइज नहीं हूंगा कि यहाँ पे रिक्रूटमेंट की बात हो रही हो, एचआर की बात हो रही हो, पर्सनल डेवलपमेंट की बात हो रही हो, ह्यूमन कैपिटल की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं हम नजर आइए। क्यों? आप कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी से इसके बारे में बात करी जा रहे हैं और मुख्तलिफ इसके एलिमेंट्स कवर कर रहे हैं, चाहे वो इंफॉर्मेशन एलिमेंट है या एजुकेशनल एलिमेंट है या ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट है, सब एलिमेंट मुख्तलिफ स्पिन से दे रहे हो ना। तो ये स्माइल सेज इट ऑल यंग मैन। आपने पढ़ लिया मुझे पूरा. सर मैं Yes, पढ़ नहीं लिया, मैं एल्गोरिदम को समझ गया, ह्यूमंस को तो मैं पढ़ने में स्पेशलिस्ट नहीं हूं, मुझे एल्गोरिदम की समझ है, वो एल्गोरिदम चलता ही ऐसे सर। जो भी ऑनलाइन स्पेस है ना, मैंने वर्क टेस्ट चलाई तो फिर मुझे एल्गोरिदम समझना था बाकी चीजों का। मैंने उस एल्गोरिदम को समझने के लिए एक सियाना अमेरिका से हायर किया, उसके साथ गपशप मारी, उसका उसके घंटे खरीदे, उसके घंटे खरीदने के बाद मुझे समझ लगी कि जो मैं कर रहा था अगर मैं ऐसे ही करता रहता तो घंटा फर्क नहीं पड़ना था मेरी व्यूअरशिप में, क्योंकि मैं था ही गलत डायरेक्शन पे। तो फिर मुझे समझ लगी कि ये वो करते हैं, इट्स अ हुक, इट्स अ हुक, एंड ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट टैप ऑन दैट। यही फेसबुक कर रहा है आपके साथ, यही यूट्यूब कर रहा है आपके साथ, यही गूगल सर्च इंजन कर रहा है आपके साथ, यही टिकटॉक आपके साथ कर रहा है, यही लिंक्डइन कर रहा है, यही ट्विटर कर रहा है सर। बिल्कुल सर. मेरे लिए जिसका आपने मेंशन किया, कंसिस्टेंटली जो मेरे एक्सपीरियंस में और जो मेरी एजुकेशन में जो है शेयर करना, वो मैं करता रहा हूँ. एंड आई थिंक इट अट्रैक्ट्स पीपल, और उसको कंसिस्टेंटली करते रहे तो नेचुरली फॉलोअरशिप उस पर बढ़ती रहती है. एंड आई थिंक वो मेरी नीश है, क्योंकि मैं उस फील्ड में काम कर रहा हूँ. हर बंदे की अपनी नीश है. तो व्हाट आई टेल पीपल इज कि आप उस नीश को पुश करते रहें एंड पीपल विल स्टार्ट फॉलोइंग यू. सर आपने डिजिटल मार्केटिंग की बात की, और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उससे रिलेटेड था कि a lot of people, and these are some questions that people ask me when I mentioned I'll be in a podcast with you. How can entrepreneurs grow online business locally and internationally? So Instagram है, Facebook है, वहाँ पे ad भी चला लेते हैं. I also have an oil brand जो मैं साइड पे as a business लेके चलता हूँ. It has been 2 years and I know कि ये सब चीजें साथ साथ चलती हैं, but इसके अलावा क्या चीज हो सकती है, या फिर इन्हीं को टूल्स को यूज करते हुए इफेक्टिवली कैसे अपना ब्रांड ग्रो कर सकते हैं, बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, एंड even for that matter LinkedIn as well. सर ये सारे वारदात के टूल्स हैं, ये तरीका वारदात नहीं है सर, ये वारदात के अलाकार है जो इस्तेमाल करने की बात हो रही है, और हर डिजिटल मार्केटर इन्हीं की बात करता है अनफॉर्चुनेटली। तो कंटेंट फिर यही नजर आएगा सारा का सारा। अब तरीका वारदात पे बात करनी चाहिए
मेरे नज़दीक तरीका वारदात आज के दौर में ईमेल लिस्ट बिल्डिंग है। मेरा लिंक्डइन पे जो न्यूज़लेटर है वो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है उस पर, अगर आप जाके देखिए मेरी प्रोफाइल। अब इसका मतलब क्या है कि मैं ऑल ऑफ अ सडन इंस्टेंट आई बॉल्स अट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो मेरा व्हाट्सएप चैनल है, बड़ी अच्छी व्यूअरशिप है। इसका मतलब है कि मैं एक कंटेंट पुश करने पे ऑल ऑफ अ सडन अपना कंटेंट इतनी ज़्यादा आईज को दिखा सकता हूँ। फिर मेरे मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, बहुत ही बड़ा नंबर है जी, अराउंड 300 के जी। अब इसका मतलब है कि मैं उन ग्रुप्स को, इवन तो मुझे भेजने में उन 22 ग्रुप्स में है, एक ग्रुप के अंदर 5-5 हज़ार बंदा आ जाता है जी। तो और जो उनके जो कम्युनिटीज़ हैं उनके, वो अलग हैं। उसमें गुज़ारिश है कि मैं भेजने में टाइम लगाऊँगा लेकिन एक इंस्टेंटली मैं सबको रीच आउट कर लूँगा। आज के दौर में ना कम्युनिटीज़ बिल्ड करने पे एम्फेसिस होना चाहिए कि मैं कैसे इंस्टेंटली अपनी बात लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँचा सकता हूँ, और इंटरनेट आपको ये लेवरेज देता है। मिसाल के तौर पे मेरा यूट्यूब चैनल है। अब यूट्यूब का एल्गोरिदम बड़ा भयानक किस्म का है जी, कि मिसाल के तौर पे 1 मिलियन प्लस के बावजूद भी मैं वीडियो डालूँ तो बात नहीं चलनी तो 1000 व्यूज़ भी नहीं आने। चल गई तो पिछले हफ्ते चल गई 2 लाख के, कोई बात नहीं, वो तो किसका है? तो 2 लाख व्यूज़ आ गए जी, ठीक है। नहीं चलनी तो 1000 भी नहीं आने। बट जब मैं बात करूं इंस्टेंट आई बॉल्स की, तो मेरा न्यूज़लेटर लिंक्डइन का, मेरा बीइंग गुरु का जो ब्लॉग के थ्रू न्यूज़लेटर है, व्हिच इज एक्चुअली अराउंड सरकार 800 के, बहुत बड़ा नंबर है ना। अब उस 800 के को मैं भेज ही नहीं सकता, इतने ज्यादा पैसे कौन डाले जी। अगर मैं जाता हूँ सर्वे में किसी भी साइट पे जाता हूँ, मैं कांस्टेंट कांटेक्ट पे जाता हूँ, कौन भेजे। अगर मैं अपने वीपीएन को यूज करता हूँ 2 दिन में बैठ जाता है, तो मुझे इसको चंक में भिजवाना पड़ता है। तो मैंने फिर ये तरीका वारदात समझा कि सबसे आसान तरीका है किसी की चीज इस्तेमाल करनी। लिंक्डइन के पास अपनी स्पेस है। मैं कल 1 लाख कर दूंगा, अल्लाह जिंदगी से दे, 1 लाख को मैं 1 मिलियन में कर दूंगा। फिर मैंने अगर 1-2 प्लेटफॉर्म पे कर दिया है तो उसका मतलब इधर भी तो चांस है ना। और ये याद रखिएगा कि लिंक्डइन का एक, बाकी सब प्लेटफॉर्म के 2 होते हैं। मैं इसको ट्रांसलेट नहीं करूंगा। लिंक्डइन का एक, बाकी सब प्लेटफॉर्म के 2 है। सर इस पे इलैबोरेट करेंगे, इसका क्या मतलब? सर मैं कर देता हूँ। लिंक्डइन का एक फॉलोअर किसी भी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के 2 फॉलोअर के बराबर। प्रिसीजन फोकस्ड है ना, टारगेटेड ऑडियंस है ये। तो अब ये ज़हन में रखिए कि मुझे फोकस करना है यहाँ पे न्यूज़लेटर बिल्ड करने में, मुझे फोकस करना है यहाँ पे एक्विटेंसेस बिल्ड करने में, मुझे फोकस करना है अपनी वेबसाइट का ऑप्ट-इन फॉर्म फिल करवाने में ताकि लोग मेरे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करें। मुझे फोकस करना है अपने व्हाट्सएप चैनल्स और ग्रुप्स और कम्युनिटीज बनाने में, ताकि सर कौन अब इतनी बड़ी बैठे प्रेस रिलीज करे, पैसे लगाए, गूगल एड्स लगाए, फलां करे, यूट्यूब पे वीडियो डाले, कंट्रोल ही नहीं है ना आपका। जिस चीज पर कंट्रोल है वो बासर चीज है। तो मैं फोकस कर रहा हूँ इन कम्युनिटीज पे एज ए डिजिटल मार्केटर कि भाई मैंने अगर कोई बात पहुंचानी है आ गई। कल परसों एक परफ्यूम वाले को शॉर्ट आउट दिया, नहीं इधर ही नजर आएगा, लिंक्डइन पे भी पड़ा हुआ है मेरे, उस पे भी। वो भैया इतने खुशी से फूले नहीं समाये, क्या वो कह रहे हैं जनाब मुझे वीडियो दे दें तो मैं इसको स्पॉन्सरशिप वो लगाना चाहता हूँ जी, इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि टारगेटेड ऑडियंस होनी चाहिए, नालायक ऑडियंस का आपने क्या करना है। ठीक है जी। अब मैं आपको कुछ अगर सुना पाऊँ यहाँ पे तो देख लेता हूँ मैं, वैसे मुझे पता नहीं है कि यहाँ तक आवाज़ जाएगी कि नहीं जाएगी, पर आई कैन फाइंड इट आउट जी। अस्सलामुअलैकुम जी। सर अल्लाह का शुक्र है, हमारे जो है गूगल सर्च काफी इम्प्रूव हुई है और अप्रॉक्स 3-4 दिन में 30K के ऑर्डर्स भी आ गए। टारगेटेड ऑडियंस, व्हाट्सएप चैनल्स, लिंक्डइन न्यूज़लेटर और व्हाट्सएप ग्रुप्स। व्हाट्सएप ग्रुप ना जी, ना नहीं है कंट्रोल फेसबुक ग्रुप वगैरह में, किसी पे भी नहीं है। सोशल मीडिया पे किसी भी जगह पे आपका कंट्रोल नहीं है, मेरी बात मान जाए। मेरी टोटल ऑडियंस पाकिस्तान की डिजिटल स्पेस पे सबसे ज्यादा, बिल्कुल सबसे ज्यादा ना भाई। मिसाल के तौर पे मेरा पेज जो है वो 1 मिलियन हिट करने लगा है, मेरा प्रोफाइल 4 लाख का हो गया, मेरा ग्रुप 500,000 प्लस है,
मेरे 2 ग्रुप 1-1 लाख के हैं फेसबुक पे, मेरा लिंक्डइन इतना बड़ा है, मेरा यूट्यूब 1 मिलियन है, मेरा दूसरा अंग्रेजी का यूट्यूब 500 मिलियन इंटरनेशनल ऑडियंस, मेरा बीइंग गुरु का ब्लॉग इतना बड़ा। इस नंबर्स का कोई फायदा नहीं। सुतरा खेलो। आज की एडवाइस में जैसा मैंने आपको बताया, आपने यही पूछा, कम्युनिटी बिल्ड करो, उनके साथ 1 to 1 इंटरेक्शन करो, व्हाट्सएप, न्यूज़लेटर, तीसरी कोई चीज ही नहीं है। एंड सर तरीका न्यूज़लेटर वारदात पे फोकस करना है, अलाकार पे नहीं फोकस करना, टूल्स पे नहीं फोकस करना, तरीका क्या है ये सोचे। सर ये नंबर तो 1 गोल्ड न्यूज़लेटर, जी। नंबर 2 व्हाट्सएप, बस खलास। एंड न्यूज़लेटर पे जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं उनसे आप लिंक्डइन पे कम्युनिकेट कर पाते हैं, लाइक 1 to 1 मैसेजेस, या वो किस तरह आपको क्या वो जरूरत है तो भाई, जब वो तो मैंने आपको उसको कह दिया उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया। अब लिंक्डइन आपको क्या एबिलिटी देता है? 2 तरीकों से, एक थ्रू पुश नोटिफिकेशन ऑन द प्लेटफॉर्म, एंड सेकेंडली लिंक्डइन आपके बिहाफ पे उन लाखों लोगों को ईमेल भी करता है वाया लिंक्डइन, वाया हिशाम सर्वर के सब्जेक्ट के साथ ईमेल आती है। तो भाई मुझे क्या जरूरत है उनको, बस मेरा पैगाम पहुंचा दें, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो सर्विस हो, पैगाम पहुंचा दें। I didn't know this. This is news. So communities थैंक and यू करण। obviously WhatsApp and LinkedIn. That is the focus. बाकी Facebook सर है, बाकी Instagram. सब ड्रामेबाजी है, मेरे पास बहुत बड़े नंबर्स हैं। अगर मैं प्रिसीजन टारगेटिंग करना चाहता हूं तो मैं आपको बता रहा हूं यूट्यूब का 1 मिलियन किसी काम का नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं मेरे फेसबुक के 2.5 मिलियन कंबाइंड किसी काम के नहीं है। सर जो फायदा है ना वो सारा का सारा या व्हाट्सएप है या न्यूज़लेटर, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। भाई मैं आज वीडियो बना देता हूँ, अच्छा अच्छी आई बॉल्स मिल गई, लाख व्यूजरशिप मिल गई है, कन्वर्शन कैसे होती है? मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा, नहीं देखेंगे एक ही टॉपिक पे, ओके सब्जेक्ट देखे, अच्छा यार कल तो इसने बोला था, छोड़ रहे। लेकिन जब मैं टारगेटेड ऑडियंस को जबरदस्ती दिखा रहा हूं उनके फोन के ऊपर, जिसको उसने ऑप्ट इन किया हुआ है कटंग यूं करके, या उसकी ईमेल बॉक्स पे मैं नमूदार हो गया हूं जी, ये कटंग एक्स्ट्रा साइड इफेक्ट्स के लिए था। तो भाई जब मैं नमूदार हो गया तो पड़ेगा ना मुझे, फिर इग्नोर करने की चॉइस ही कोई नहीं है। फिर मैं चाहे रिपीटेड बात करूँ, क्या करेगा, ज्यादा तंग आके अगर मैं मिसाल के तौर पे उसकी जान अजाब बनाने पे आया हूँ तो अनसब्सक्राइब कर देगा। उसका मतलब गलती तो मुझे पता लग गई है ना कि मैंने उसको पुश नहीं करना है किसी चीज पे। अब पुश करने से क्या मुराद है? रात के 3 बजे मैं किसी को मैसेज भेज दूं तो आप क्या समझ रहे हैं कि वो मुझे फूल पेश करेगा? मुझे सलावतें सुनाएगा ना सर कि ये पागल है क्या है। अगर मैं मुनासिब वक्त में उसको न्यूज़लेटर जो कि उसके ईमेल बॉक्स में अराइव कर गया और उसको व्हाट्सएप मैसेज करूं, सर वो क्यों नहीं मेरी बात सुनेगा? और मॉडरेट मॉडेस्टी, ये नहीं कि मुझे पता लग गया ये मेरे पास इतनी ऑडियंस है तो मैं अपने एक दोस्त को बरसरे एहतराम, आपकी ऑडियंस को मैं नहीं जानता हूँ, मैं अपनी ऑडियंस को तो बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि मैंने मेरे दोस्त ने कहा कि यार मुझे ना अपने न्यूज़लेटर पे कंट्रोल दे दे लिंक्डइन के। तो मैंने कहा ये ऐसे ही है जैसे बांदर को मैं सीटी दे, तो बुझाता रहेगा 24 घंटे भैया, मेरा दिमाग खराब है, मैं अपनी ऑडियंस को खराब करूं? सो आई नो दैम, आई नो कि मुझे किस टाइम इंटरवल्स के बाद इनको कुछ दिखाना है। आई कैन आई कैन यूज दिस फिलॉसफी ऑफ मुर्गी जबा करने की और सारे अंडे निकालने की, बस गया काम अगर मैंने ज्यादा तंग किया तो। सो व्हाई नॉट वेट फॉर माय टाइम एंड कीप ऑन रिसीविंग गोल्डन एग्स आफ्टर इंटरवल्स। तो कंट्रोल, विद पावर कम्स रिस्पांसिबिलिटी, कंट्रोल भी बड़ा जरूरी है, बट ये 2 चीजें सब, यही 2 चीजें And मेरे लिए काम you करती build that space of respect as well. You हैं। maintain बहुत that जरूरी है सर, बहुत कि जरूरी है वो सर। फील करें कि ये हमें रिस्पेक्ट करते प्रिविलेज्ड। हैं, हमारी हमारी बेहतरी के लिए यहाँ पे बैठे हैं। एंड दैट्स इज व्हाट आई फील। जब मैं किसी भी आपके बारे में बात करता हूँ कहते हैं इनकी वजह से हमारा लाइफ इस तरह इम्प्रूव हुई। या आपने, आई थिंक मैं उस दिन एक वीडियो देख रहा था, आप आई थिंक इस्लामाबाद में किसी कन्वेंशन सेंटर था या कौन सा था, एंड यू वर एंटरिंग दैट प्लेस। तो वो बस मैंने देखा है एंड आई वाज लाइक, क्योंकि मेरी तो आपसे 2020 में बात हुई थी, मैंने कहा यार लाइक एक होता है ना कि बंदा ख्वाब देखता है कि यार इतना इम्पैक्ट क्रिएट करना है, तो वो मेरे लिए एक बहुत इंस्पायरिंग भी था एंड मैं खुश भी था कि मैं आपको कभी मेरी आपसे बातचीत हुई है, सीखा है आपसे, और आज आप यहाँ पे वो इतना इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। सो डेफिनेटली, और ये जो आपने चीज़ें बताई, आई थिंक मैं, क्योंकि मैं तो लिंक्डइन में काफ़ी अर्से से एक्टिव हूँ, 10 साल हो गए, आपने गोल्ड, आई थिंक गोल्डन वर्ड्स आपने यहाँ पे किए। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर टॉकिंग अबाउट दिस, बट थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। बहुत शुक्रिया। शाम साहब, आखिरी क्वेश्चन,
सर जरूर सर। मैं जो मेरा मोस्टली नेटवर्क है वो ऑब्वियसली उन लोगों पे इन्हिसार करता है जो जॉब या तो ढूंढ रहे हैं या फिर जिनके पास है और ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज़ उनको उस तरह नहीं मिल रही लास्ट 1-1.5 साल में जो हमारे हालात हुए हैं फाइनेंशियली। बहुत लोग उसको मुश्किल से सर्वाइव कर, वो हमारी आदत है कौम की कि हम बर्दाश्त कर लेते हैं और वी गेट यूज्ड टू इट। वो इंसान की फितरत ही ऐसी अल्लाह ने बनाया है ऐसा हमें भी। और हम पाकिस्तान वैसे एक रेजिलिएंट एक कौम है। बट आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, मैं लिंक्डइन मैसेजेस देखता हूँ, इट ब्रेक्स मी, दे हैव गिवन अप। दे हैव गिवन अप बिकॉज दे कीप ट्राइंग। आई नो, मैं उनको बहुत दफ़ा बोलता हूँ यार ये वीडियोज़ हैं, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आपको कोच कर सकता हूँ। कहते हैं यार हमने हर चीज़ कर ली है बट इट्स जस्ट दैट आई थिंक हमारी किस्मत में नहीं है, या फिर हमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, या फिर हमारी वो एजुकेशन नहीं है, या फिर हमारी हमें कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है। सर उनके लिए आपका क्या पैगाम है? क्योंकि ये मेजॉरिटी अवाम जो है ना, जो मेरे पास लिंक्डइन पे आती है, वो इसी कंडीशन में जॉब है। तो वो सर मुझे दुख होता है ना, ऑब्वियसली आप एक इसी आपने लोगों के रोजगार बनाने में, पाकिस्तान की फैमिलीज की रोज उनको उनको चलाने में आपका एक हाथ है, एटलीस्ट मैं मुझे ये लगता है। तो सर आपको भी ये दर्द फील होता होगा। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट देम एंड व्हाट नहीं, मैं मैसेज और व्हाट दे कैन डू? आपके सवाल के दो हिस्से हैं। आपने चूंकि पहले भी इस एक हिस्से को पुल अप किया और तो मैं मुनासिब समझता हूँ जवाब दे दूं। नहीं, मेरा कोई किरदार नहीं है जी। एक मार्केट स्ट्रगलिंग थी, मैंने उनको एक नया रास्ता दिखा दिया बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बाकी तो लोगों की मेहनत है ना, उनके पेरेंट्स की दुआएं हैं। तो आ, उसमें मार्केट pays you for bringing the value to the market. If you're not upgraded yourself, which essentially means कि आपका आज गुजरे हुए कल से और आने वाला कल आज से बेहतर नहीं है, you are only yourself to be blamed. But the problem is we live in a country where victim blaming and victim playing is far more easier than reflecting on yourselves. मैं बहुत harsh हो रहा हूँ. You cannot control weather. What does this mean? If the weather is bad, you'll not go out of your house for earning your bread and butter. You cannot control economy of a country. What does this mean? That you'll put your hands up, that the government has failed to provide for my family. It's not the government's responsibility, for God's sake. It's your responsibility to feed your family. And you can only feed your family good if you work on yourself. So the change actually comes from within. If you are stagnant in your role in an organization for years after years, or if you have been given a letter of thanks and you're unable to find a new opportunity, for once, how about reflecting it onto yourself, that I am not here or I'm not there just because I I did not work on myself. How about this reality check? Market pays you for bringing in the value to the market. So the external circumstances are not in your control, but your skill set, your improvement, your communication skills, your profile, your personal development, that's what is in your control, and that is what the market is willing to pay for. मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं कि यहाँ पे फ्रेश कॉलेज ग्रेजुएट निकालो और एक 10 साल के कॉर्पोरेट बाबे के साथ, हालांकि बाबा नहीं होता, 25 साल में स्टार्ट करता, 35 साल का हुआ होगा, अगर उस बच्चे ने इंटरनेट बेस्ड अपॉर्चुनिटीज और ट्रेनिंग्स एंड टीचिंग्स को इनकैश किया, अपने माइंड को फीड किया विद राइट स्किल सेट एंड नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, learns how to communicate, learns how to talk, learns how to present himself, learns how to converse nicely in a coherent and a concise way, 10 times over I'm willing to write this on a piece of paper के वो हराएगा उस 10 साल के तजुर्बे वाले, because a natural talent is good for nothing if it stops working on itself. So mediocrity is just a cliche. कागज पे रख दिया ये काला है. For God's sake, that color can always be changed. There's so many ways to turn around the page and start all over again. But it requires a willingness of a person to work on themselves, to overcome their shortcomings,
to assess the reason of their failures in life, to train their brain that yes, they can. And once they train their brain for the fact that the market is as competitive, but so am I. I'm less, second to none. I'm no lesser competitor. सब फिर देखें कैसे जिंदगी चेंज होती है. रोना धोना तो वैसे भी हर कौन. मेरा एक फेवरेट कोट है रॉकी बल्बोआ मूवी का, and while giving a motivational speech to his son Sylvester Stallone, जो कि रॉकी के रोल में है, goes on saying, "The world ain't all sunshine and rainbows. It's a tough, nasty, and a mean place, and I don't care how tough you are. It will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody can hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. Now, if you know your worth, go out and fetch your worth, but you've got to be willing to take the hit. And stop pointing fingers that I ain't because of him, her, market, or anybody. Cowards do that, and you ain't a coward." सर ये जो पर्सनल डेवलपमेंट है ना, ये इधर से स्टार्ट होती है कि वो जो बिलीफ है ना कि आई एम सेकंड टू नन, कि आज मेरी जेब में 5 फुटी कौड़ी नहीं है अगर मैं 5 करोड़ का सौदा करने आया. The first thing is you need to have a belief in yourself, and you'll only have belief in yourself once you overcome your fears. Once you overcome the fears of failure, once you overcome the fears of rejection. Young man, I can go at length and talk about this. ये मेरा सब्जेक्ट है. इसके लिए एडवाइस करूंगा तमाम देखने वालों को कि go to my YouTube and there is a playlist called Mind and Focus. आराम से पहली वीडियो ऑन कीजिए. Every video is in order. Play it in a screen. Let your family members watch that content. कोई ऐड नहीं आएगा. मैंने एड्स टर्न ऑफ करता हूं मैं अपनी प्लेलिस्ट पे. चौंकड़ी मारो, पॉपकॉर्न पकड़ो and watch it like a movie. अगर कहीं पे भी मायूसी हुई तो मुझे दोबारा बुला लेना, मैं आपकी अदालत में हाजिर हो जाऊं. Sir, thank you so much. That was very inspiring. And yes, आपने recently LinkedIn पे I was following Mind and Focus कि आपने series शुरू की, and I also have to watch that. शाम साहब, as always, it's a pleasure. Life का पता नहीं चलता, 4 साल गुजर गए last conversation में. बट मैंने आपको फॉलो करना नहीं छोड़ा, एंड अभी भी आपने एक घंटे के टाइम में मुझे जितना इंस्पायर किया, आई एम श्योर इंशाल्लाह हजारों लाखों जितने भी लोग ये देखें इवेंचुअली वो इंस्पायर हों एंड हम उसी तरह सक्सीड कर सकें. मुझे आपकी बहुत बहुत अच्छी लगी ये बात जो आपने बोला कि हाउ पर्सनल डेवलपमेंट एंड हाउ विलिंगनेस प्लेज अ पार्ट इन योर ओन सक्सेस. आई ऑल्सो फील दैट. और ये जो ब्लेम गेम है ना कि बस किसी पे ब्लेम करो ताकि मेरा जो फेलियर है वो छुप जाए, that's again those are golden words for me. Sir, thank you so much, and I'm sure people can reach out. People already know, but still jo anyone who is not aware about it, Hisham Sarwar can be reached on LinkedIn, and obviously he's everywhere. He's on Facebook, he's on YouTube. उनके अपने channels हैं where you can follow him. इनके WhatsApp channel, इनके page पे cover photo पे भी लगा हुआ है, so you can join that. Sir, thank you so much. Inshallah, until next time. Thank you, everyone. Pleasure, sir. Thank you for